एवरीवन गुड मॉर्निंग। चलो आज का प्रॉब्लम देखते हैं, मिनिमाइज एक्सओर। ओके, तो प्रॉब्लम का कहना है कि वी हैव टू नंबर nums 1 and nums 2 and find the integer x such that x has the same number of set bits as nums of 2 and XOR of x and nums of 1 is minimal. Okay, first and second observation, and okay, that is it. There are two main observations और example है कुछ nums 1 and nums 2 3 and 5 दिए respectively and result is 3. How 3 and 5 both have same number of set bits and 3 XOR 3 will be 0. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो पहली टेस्ट केस में, that nums and x the resultant will be same. Why? We are performing XOR. XOR सेम नंबर का सेम नंबर के साथ करते हैं तो वो जीरो आता है, राइट? यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिट वाइज ऑपरेशन। सर नहीं आते तो देख क्या। एंड यहाँ पे फिर से वही nums 1 and nums 2 have 11, what is 1 and 12, and our result is 3. Result और x बोलेंगे जो है वो, because 3 and 12 have same number of set bits 2 and 1 XOR 3 is 2, that is the minimum thing can be possible. Okay, right? तो चलो अभी काम करते हैं, वही अपना पेन और पेपर वाला कंसेप्ट देखते हैं क्या है मेन ऑब्जर्वेशंस एंड फॉरवर्ड करते हैं। सो दिस इज द लास्ट ऑफ। तो बिटवाइज ऑपरेशन जो इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं वो है एंड और नेगेशन एंड एक्सओर। ओके, सो इनिशियल ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं यहाँ पे सिंपली nums 1 nums 2 and x is what we have to find from the nums 1 and nums 2. So observation is number of set bits in nums 2 and x must be same and nums 1 XOR x should be minimum. तो मेन ऑब्जर्वेशन यही था, nums 1 का XOR अगर nums 1 के साथ होता है तो इट विल बी जीरो। तो इनिशियली हम x को nums 1 कंसिडर करते हैं एंड देन वी फाइंड द नंबर ऑफ सेट बिट्स इन nums 1 and what you can say x and nums 2. Okay, then if number of set bits in x is lesser than nums of 2, then we have to set the bits in x from the least significant side, and if number of set bits in x becomes greater at any point of time of from nums of 2, then we have to unset the bits. Okay, तो ये main observations है. Try to fix. Count, setting and unsetting are the three operations that we have to perform in this question on the number x, desire x, nums 1 बोल सकते हैं सीधा। तो यहाँ पे देखेंगे how we can perform the पहले तो देखेंगे हाउ वी कैन चेक वेदर बिट इज सेट और नॉट। तो सिंपली यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वेदर बिट एट इंडेक्स 1 इज सेट और नॉट इन 10010। तो उसके साथ क्या किया, 0010 से हमने एंड किया एंड इफ वी गेट 1 एज आउटपुट एंड दिस इंडेक्स, दिस इज ऑपरेशन। ओके, we are checking in this number at index 1, if this returns 1 then it says it is 1, because we are shifting one position back, one position in the in in the left direction. Okay, so for checking whether a bit is set or not, and if it is not set maybe in terms, so how we can set the bit? So अभी हमने AND किया तो return 1 किया, if we do it OR, what will it return? It will return the front number and the other set bits that are in our operation here, 10010 or 1 left shift 0. Look, it will be on its position only, it will not shift in anywhere. So that is how it is. Okay, the check bit and the set bit. Now we will go for unsetting the bit. We will simply do the negation operation and it will unset the bit. Okay, and what should be the approach now? हमने तीनों ऑपरेशन देख लिए हैं, सेटिंग द बिट, अनसेटिंग द बिट, और जो इनिशियली मैंने अप्रोच बताई कि नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करने हैं एक्स, दैट इज नम्स ऑफ 1 एंड नम्स ऑफ 2, और उनको बैलेंस करने की कोशिश करनी है। इफ इट इज लेस देन वी हैव टू सेट द बिट एंड ये सेट करते हुए हमें जो बिट का जो इंडेक्स है ना वो भी मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज इफ वी आर सेटिंग एट ओनली वन इंडेक्स, इट्स वो कोई सेंस नहीं करेगा चीज, मतलब वो रिजल्ट
प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो हमें एक इंडेक्स वेरिएबल रखना पड़ेगा इन द लिस्ट सिग्निफिकेंट साइड, मतलब जीरो से, और हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं, एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर चेकिंग वेदर द काउंट इज बैलेंस और नॉट। इफ इट इज लेस देन, in a front row we have to think that if it is a less than, we have to add what can we have to set that bit and increment the count of number of set bits in x, okay, then compare again. This should be done in one loop, okay। ये एक लूप में कर सकते हैं हम प्रोसेस, अगर इन अ actual implementation part देखा जाए तो। And further moving, if at any point of time count is greater than the number of set bits in nums of 2, then there is another loop outside, outside, जहाँ पे हम कंपेयर करेंगे नंबर ऑफ बिट्स। if number of bits in x is greater than number of bits set bits in nums of 2, तो हमें अनसेट करना पड़ेगा by this negation operation, ओके। और ये सारी चीज़ें ऑन द रनिंग x होगी with running index of the set bit count of x, okay। So in the last, time and space will be of log n and of 1 respectively space, और कोड दिखता है सीधा, it will give you a good understanding, okay। तो मैंने सीधा लीड कोड का जो सोल्यूशन है बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी होता। मेरा प्रॉब्लम था जो थोड़ा ब्रूट फोर्स से मैं गया था, बिकॉज बिटवाइज इज नॉट दैट, बिटवाइज करते वक्त वो थोड़ा काइंड ऑफ ऑड साइड गया था मैं इम्प्लीमेंटेशन में, मेरा उससे हुआ था। बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अप्रोच सही रहेगा, where we are considering result as nums of 1 initially, और काउंट कर रहे हैं हम set bits in both using pop count, the library function, and then ये है जो इंडेक्स मैंने बोला है आपको मॉनिटर करने के लिए फॉर काउंटिंग और मूविंग और ट्रैवर्सिंग ओवर द एक्स, ऐसे बोलेंगे सीधा। ठीक है, सेट बिट का अगर एक्स में का काउंट अगर लेस देन है नम्स ऑफ 2 के, तो चेक करना है whether current bit it's set or not. If it is not set, we have to set it, or set bit count of x will be incremented and our index also incremented. That is the one thing. And any point of time our set bit count of x is greater than the target, it will break down, okay। और अगर वो break होता है वहां से, then it will go to here, this loop, set bit count is greater than the set bit counts, मतलब ये possibility हो ही नहीं सकती in one test case, because अगर वो लेस देन सेट बिट काउंट है तो इट विल बी बैलेंस विद टारगेट सेट बिट काउंट, ओके। तो ये एक टेस्ट केस के लिए हो गया, एंड दिस इज फॉर अनदर टेस्ट केस जहाँ पे ऑलरेडी नम्स ऑफ 1 में सेट बिट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नम्स ऑफ 2, देयर इट विल बी यूटिलाइज। तो ये दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की दैट कैन बी देयर, ओके। और अब हम वही सेट बिट और अनसेट बिट और चेक बिट वाले फंक्शंस देख लेते हैं। ये देखिए, इस सेट, इस सेट कैसे चेक करें, सिंपली जिस इंडेक्स पे हमें मूव आउट करना है, मतलब चेक करना है वेदर देर इज अ वन और नॉट, सिंपली उस इंडेक्स को वन से लेफ्ट शिफ्ट कर दो और एंड कर दो, इट विल रिटर्न वन इफ देर इज वन दैट index or not। And if we have to set it, we have to just pass x with a pointer variable, reference variable, and we have to set using or operation, okay। And this is another example of that। एंड इफ यू हैव टू अनसेट, देन सिंपली रेफरेंस के साथ पास कर दो और नेगेशन कर दो एंड के साथ, ओके। दैट इज हाउ इट इज डन। टाइम और स्पेस भी हमने डिस्कस कर लिया, अप्रोच भी देख लिया। अप्रोच कुछ नहीं है, इफ वी हैव लेसर नंबर ऑफ सेट बिट्स वी हैव टू सेट इट, एंड इफ यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ सेट बिट्स इन नम्स ऑफ 1 वी हैव टू रिड्यूस इट। तो हमें फोकस करना है नम्स ऑफ 1 और नम्स 2 पे ही, एक्स का छोड़ दो, एक्स को सोचो ही मत। हमें क्या करना है, नम्स 1 और नम्स 2 की सेट बिट्स इक्वल करनी है बाय परफॉर्मिंग सेट एंड अनसेट ऑपरेशन ओवर नम्स ऑफ 1। और सेट कब करेंगे, जब लेसर नंबर ऑफ बिट्स है एज कम्पेयर टू नम्स ऑफ 2 फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड, एंड अनसेट कब करेंगे, जब नंबर ऑफ सेट बिट्स ज्यादा है इन नम्स ऑफ 1 एज कम्पेयर टू नम्स ऑफ 2 फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। दैट इज द मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, नथिंग एल्स। बहुत इजी प्रॉब्लम है, बट इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी बिटवाइज थोड़ा जो ऑपरेशंस होते हैं हम फेमिलियर नहीं होते, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में बिटवाइज उतना आता नहीं है। दैट्स व्हाई, ओके, ट्राई टू फोकस एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल यार। आप लोगों में से जो लगभग 90 to